ऑल राइटी। हेलो। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो टुडे वी आर शूटिंग दिस पॉडकास्ट विद निखिल राणा, माय डियर फ्रेंड, ऑल्सो अ फेलो फाउंडर फ्रॉम द फाउंडर कम्युनिटी। और दिस इज गोइंग टू बी मोर ऑन कि फाउंडर्स क्या फेस करते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे खाते पीते हैं, क्या दिक्कत है उनकी लाइफ में और कैसे ओवरकम कर रहे हैं, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन सॉल्विंग ऑल दीज प्रॉब्लम्स, एंड वी विल ऑब्वियसली टॉक अबाउट सम फाइनेंस. अमेजिंग। So I'm your host, Parag, and with Manu, we are developing Simplify Money, which is an AI-powered personal finance companion. और हम लोगों को बुला के पूछते हैं कि बाकी चीजें कैसे सिंप्लीफाई करी जा सकती. Alright, word about our guest Nikhil. Nikhil, as I said, is a fellow founder, and he is developing plans, which we'll dwell into later. और मैं निखिल से कैसे मिला? We met at a mixer event. निखिल की ऐसी खासियत थी कि निखिल एक जगह खड़ा होकर बात कर रहा है, इधर 4 लड़कियाँ खड़े होके सुन रही हैं, उधर 4 लड़के खड़े होके सुन रहे हैं, और पूरा माहौल बना हुआ है कि निखिल ने क्रैक कर लिया है। निखिल जाके बात ऐसे ही कर रहा था कि मैं 600 लोगों से बात कर चुका हूँ। आई हैव एवरीथिंग वैलिडेटेड। मुझे बस प्रोडक्ट बनाना और बेचना, एवरीथिंग एल्स इज सॉर्टेड। दिस इज हाउ आई मेट निखिल, एंड ही हैज गिवन अ लास्टेड इंप्रेशन. He is a supremely sweet guy, and I'm glad that we got in touch. And welcome, Nikhil. What's your journey? What is Plunge? Take us through it. Thank you so much, ladies and gentlemen. My name is Nikhil, and the host is super sweet. I'm not as good as he says. I'm just another guy who's wanting to do something, but Parag Bhai is too sweet when it comes to hosting people. Great host. I'm sure you're gonna be asking a lot of great questions. When I say great, I mean uncomfortable questions. A lot of company. What are we doing? Like I said, my name is Nikhil. I'm building Plunge. What is Plunge? Plunge is a social networking app that helps you Yeah. meet people for plans, activities, and experiences. What we are trying to solve is pretty simple. Every time you think of doing anything, imagine if you're a 20 to 30-year-old individual living in a metro city, Delhi, Bombay, Noida, Gurgaon, wherever, and you think of doing anything today. You want to be traveling, you want to go for a coffee, or there's a concert happening, or there's a run club that you go to for run. The biggest problem is you don't have people around to go to these activities. Every time you call a friend, they're busy or they just don't want to do that even. All you have to do is you have to come to Plunge, post that you're going for a coffee today, and we'll help you match with someone who's also going for coffee, and hence making sure that you're not alone for anything. And that's precisely what we are doing. हमें ये मीटअप भी प्लंज पे डालना चाहिए. ये मैंने डाला है ब्लेंस पे, लेकिन सिंस हमारे केस में प्रॉब्लम नहीं थी, हमारा तो ऑलरेडी प्लान ही था, तो ज़रूरत नहीं पड़ी प्लंज की. But every time I travel, if I'm traveling to Gurgaon or I'm going out for drinks or doing something, I make sure I post it on Plunge. In fact, just yesterday I met someone over drinks. We met at Social Rajouri Garden. It was a guy who posted on Plunge that he wants to go out for drinks, and then we planned it out. Right, so it was me, him, and a friend of his. And we met, and it was a good time, and they really liked the idea. Awesome. पर ये बताओ यार, ये आइडिया कैसे आया? इससे पहले मुझे तो पता है that you are a super sales guy. ये बिना बालों वाला रॉकेट सिंह है. और but how did you graduate from pure sales to a founder role? Why did you do that? क्यों लिया है ये उड़ता तीर और आगे क्या करना है? Um, yeah, I always wanted to start up. I was in college. I studied aerospace engineering. I was traveling to US for my master's in engineering management, and the goal was pretty simple. I did not give a fuck about engineering management. I didn't want to study at all. I had 13 supplementary exams to take in my college, which means 13 subjects में मैं fail था, जो मैंने last semester में crack किए. तो पढ़ने वढ़ने से मेरा कोई लेना देना नहीं था. Though I was academically very good, but there was just one agenda जिसके लिए मैं US आ रहा था, which was Silicon Valley. There was Silicon Valley is in US. I wanted to go to US and start up from there. I could not go. COVID happened. My classes were supposed to start in January 2020. मैं जा नहीं पाया. तब तक मैं काम कर रहा था एक बहुत महान कंपनी में, नाम नहीं लूंगा. But I was working there. I started with sales, started with a little bit of marketing, little bit of profit and loss management, and then फिर चेंज किया, प्रॉप टेक में गया, प्रॉप टेक कंप्लीट हुआ तो फिनटेक में गया, फिनटेक कंप्लीट हुआ तो कंस्ट्रक्शन टेक में गया. 6-7 साल गुजारे स्टार्टअप्स में, एंड इट वाज ऑल कॉन्शियस, इट वाज ऑल प्लान. सो इट वाज, आई ऑलवेज हैड एन आइडिया कि 6-7 साल काम करता है, उसमें मजे भी हो जाएंगे. तनख्वाह अच्छी थी तो 6-7 साल मौज भी मार लूंगा. गाड़ी वाड़ी खरीदी, मजे किए, आजकल लाख सवा लाख रुपया उड़ा दो हर महीने का, मजे भी किए.
और फिर एक दिन सोचा कि बस अब टाइम आ गया है, अब नाउ इज द टाइम वेयर आई नीड टू स्टार्ट। तो फाउंडर से लड़ाई करी 3-4 महीने की, भाई छोड़ना है मुझे। एंड February 2024 आई लेफ्ट माई जॉब एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड टू थिंक अबाउट व्हाट आई वांट टू बिल्ड। अगले 4-5 महीने लगाए किसी के साथ एक आइडिया एक्सप्लोर करने में। और भी बहुत सारे आइडिया एक्सप्लोर किए, मजा नहीं आया। Plunge was something which was too, what do you say, emotional to me, because I'd seen this problem getting, what do you say, penetrating into my life धीरे 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 धीरे। कॉलेज से निकला था, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, 2-3 साल हो गए तो और बड़ी प्रॉब्लम हो गई, धीरे धीरे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। And hence I said, okay, I want to solve it. I don't know if this industry exists or not. I don't know what I can build out of it. But this is a problem statement I wanted to solve. And hence we started working on the problem statement. For the first 3-4 months, we did nothing. We finalized the name and we, like he said at the beginning, we literally spoke to 600-700 people on streets. And we even used to create content out of it. मैं यहाँ चेस्ट कैम लगाता था एक GoPro और जाके CP में, खान मार्केट में, इंडियन मॉल में लोगों से बात करते थे। ओपन एंडेड कॉन्वर्सेशंस, जस्ट टॉकिंग टू देम अबाउट द प्रॉब्लम दे आर ट्राइंग टू सॉल्व एंड ट्राइंग टू गेन देयर व्यूज। टर्न्ड आउट की ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सबको ही है। But this is very interesting if you see. I know you. You are a gregarious extrovert person, and this problem not necessarily is limited to one section, but definitely felt by people who are not comfortable going out or making friends in the first go. Let's say someone like you who has traveled to a new city, trying to figure out what are the places they can visit, what are the events they can attend. So even to think of this lens is quite insightful, at least to me. हाँ, और इसमें कैसा है पराग भाई कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट थोड़ी-सी गलत समझी जाती है अक्सर। अक्सर इसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ऐसे देखा जाता है दैट पीपल डोंट हैव फ्रेंड्स, व्हेयरएज़ दैट्स नॉट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज़ वी ऑल हैव समबडी इन आवर लाइव्स। That's right. You can't find anyone जिसका एक भी दोस्त ना हो। Correct. The problem is geographies, schedules, and interests not matching with people. Which means I might have 5 friends in Delhi NCR, though I'm not from Delhi NCR. I shifted from a city to Delhi NCR. But then over the time 6-8 महीने में, साल में मेरे दोस्त बन गए। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि मुझे स्विमिंग करनी है, मेरे सारे दोस्त हाइड्रोफोबिक हैं, उनको स्विमिंग पूल नहीं लगती। तो अब मैं किसके साथ जाऊँ? इसलिए मैं अकेला हूँ। एंड दैट्स व्हाट अर्बन लोनलीनेस इज। याद बात है, उनको उस टाइम पे नहीं करना, सिंपल। सही बात। तो just to give a heads up, we are sitting in an open environment today. We are trying something new. So background noise आती रहेगी, please bear with it. Um, so I was thinking कि this of course is a problem statement and we are solving it, but there must be some inspiration जहाँ पे ये लगा होगा कि हाँ मुझे ये करना है. What was that eureka moment? यूरेका मोमेंट में इसमें एक कैटलिस्ट था शुरुआत से ही। I always wanted to do consumer internet. I always wanted to do consumer tech. So that was a catalyst where I was already getting excited with consumer product, consumer tech opportunities. But then this was where two things matched. One, super close to me. I felt it, super empathetic with my customers, and it also fit in my thesis of building something in consumer tech. I see. Okay, that's great. Like understood the problem. ये बताओ यार कि एक फाउंडर की लाइफ में जो हम डेली जीते हैं, मनु बैठा हुआ शूट कर रहा है, तुम हो मैं हूँ, there are like 1,000 problems. Anything in the universe which can go wrong will go wrong. That's how it proceeds. You wear different hats on different days or different times of the day. Sometimes at the same time you are wearing different hats. So how how do you solve for all these problems which come at a single instance? पहले तो ये बताओ कि फाउंडर की प्रॉब्लम क्या-क्या फेस करी है तुमने? एंड हाउ डू यू ओवरकम दैट? व्हाट इज दैट? So one thing I'd like to tell the audience, very, very super important. And it has been one prime reason that I say that I'm very successful at solving all of them. We need to understand that startups don't have a rule book. So if you think about opening up a restaurant, there's a rule book to it. इतना capex लगेगा, इतने लोग hire होंगे, इतने chef लगेंगे, इतनी चीजें होंगी और हो जाएगा. When it comes to any other business, there's a rule book. When you talk about startups, you look at a unique problem statement, you try to solve it with technology, and you try to scale it at a very fast speed. Whenever there is speed, there has to be chaos, right? If you're a founder, you should know from day one, this is very fucking hard. Every day is going to be tough.
if you're mentally prepared since day one that for the next 5-10 years I don't have a life, you'll probably succeed and you'll solve everything because now you've addressed it in your head. What have you addressed in your head? कि ये है ही मुश्किल, ये नहीं हो सकता और रोज दिक्कतें आएंगी। जब आप पहले इससे कंफर्टेबल हो गए तो आपकी एक्सपेक्टेशन सेटिंग बहुत अच्छी है। आपको पता है कि ये टफ ही है भाई, बस अगले दिन देखना है कि क्या नई टफ बात आती है। क्या अगले दिन मेरा फाइनेंस सॉर्ट नहीं हो रहा, क्या अगले दिन मेरे पास रहने को घर नहीं है, क्या अगले दिन मेरे को फाउंडर्स, मेरे को इन्वेस्टर्स मना करेंगे। वो एक अलग फाइट है कि आज क्या फाइट है। लेकिन एक चीज बड़ी सॉर्टेड रहनी चाहिए दिमाग में कि हर दिन एक फाइट है और 5-10 साल की फाइट ये यही है। मिनिमम 5, मैक्सिम ऑन एन एवरेज 5 to 10 इश। 10 से ज्यादा भी आप ले जा सकते हैं पर 10 के बाद सॉर्ट हो जाता है काम। बस That's a great point actually कि you prepare for the worst case scenario and you have your motivation clear कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? These two things will help you to sail through this. But ये तो तुम्हारी बात हो गई भाई कि मेरे को समझ आ गया मेरे को क्या करना है। हाँ। घर वाले हैं, बेटर हाफ्स हैं, then probably your employees are there जो आपको देख रहे हैं। You cut off from friends and family a bit. You take a step back to do what is important. वो कैसे मैनेज करना है? यार अगेन ना सैम पे शादीशुदा हूँ नहीं, मुझसे मत पूछो पर हाँ ये सब मेरा कब सही है। नहीं, मैं बोलूँगा यार इसमें भी कैसा है, एक तो एक्सपेक्टेशन सेटिंग है भाई पहले वाली। उसके बाद आपको एक-एक सेगमेंट पकड़ के सॉल्व करना होगा। जैसे आई हैड अ गर्लफ्रेंड, मेरा तो ब्रेकअप हो गया और मुझे नहीं लगता मेरी गर्लफ्रेंड दोबारा बनेगी क्योंकि समय ही नहीं है। जब आप स्टार्ट करते हो, आपको देखना है आप इस वक़्त जीवन में कहाँ खड़े हो। बिल्कुल सही बात। आप जीवन में कहाँ खड़े हो? आप 27 साल के सिंगल आदमी हो या आप 40 साल के शादीशुदा बच्चों वाले आदमी हो? ये बहुत पर्सनल था बट ठीक है। तो आपको ये 40 चीज़ें देखनी है और फिर आपको एक टाइमलाइन लेनी है कि ठीक है यार, मेरे को सीड राउंड करने में 12 महीने लगेंगे। क्या मेरे पास 12 महीने का टाइमलाइन सॉर्टेड है? 12 महीने का कैपिटल सॉर्टेड है? अगर मेरे बीवी-बच्चे हैं तो क्या उनका सॉर्टेड है? अगर मैं सिंगल हूँ तो क्या मेरा सॉर्टेड है? आपको वो देखना है। उधर देखो, आपके पर्सनल रिलेशंस कैन बी अ वेरी गुड गुड booster to what you're doing, Right. and they can also pull you back. Right. I would say you have to handle that. You have to really see who believes in you. If you're if you think somebody's gonna believe in you, tell them your story. Example, mom. Let's say my mom and dad. My mom and dad do not know what am I doing. They don't know what startups are. They don't know what this game is. They don't know पैसा रेज होता है, ये होता है, वो होता है, क्या करना होता है, कुछ नहीं। उनको इतना पता है निखिल ने नौकरी छोड़ दी है 1.5 साल पहले और कुछ करने की कोशिश कर रहा है। नया काम है, टाइम लगेगा। टाइम लगेगा सेट ऑन। तो एक्सपेक्टेशन मैंने घर पे भी सेट कर दी हुई है। आई एम आई एम अ लिटिल लकी इनफ दैट आई डोंट हैव एनी रिस्पांसिबिलिटीज विद गॉड्स ग्रेस। माय मॉम एंड डैड आर वेल टू डू, दे आर फिट एंड हेल्दी थैंक्स टू आवर genetics and pahadi and the pahadi regime we have been since childhood. So my parents are absolutely fit and fine and I've got good time in my hand that I can take things. But yeah, you'll have to manage, you have to plan. That's all. बेसिकली दो चीजें हैं यहाँ पे टेक अवे। एक जो लोग फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज या फिर जो स्टार्ट कर रहे हैं या जिन्होंने कुछ एक्सपीरियंस लेके स्टार्ट कर रहे हैं एक फाउंडर लाइफ या स्टार्टअप लाइफ, उनको कुछ चीजों के लिए प्रिपेयर होना है विच इज लाइक नॉट ओनली द मनी पार्ट, यू ऑल्सो एक्सप्लेन की एक्सपेक्टेशन सेटिंग फॉर ऑल द पीपल हु आर अफेक्टेड बाय दिस चेंज उसके साथ करना बहुत जरूरी है, विच इज अ ग्रेट पॉइंट। Yes. सेकेंडली आई वुड ऑल्सो लाइक टू शेयर दिस एक्सपीरियंस कि मेरे केस में भी मेरे मम्मी पापा को तब पता चला था कि मैं कुछ कर रहा हूँ जब मैंने ऐप लॉन्च करी थी, उन्हें बुला के ढोल बोल बुला के ये सब करा था। स्टेज पे बैठ के मैंने और मनु ने बताया था कि हमने इस दिन स्टार्ट करा, अब ये कर लिया है। सो या लाइक बट आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ कि माय वाइफ न्यू, ही हेल्प मी, शी हेल्प मी टेक दिस डिसीजन एंड यू ऑलवेज लाइक यू राइटली सेड यू ऑलवेज नीड एन एंकर जो आपको वैलिडेट कर दे। If not an anchor, then at least nobody who pulls you back. वो तो खैर मिलते ही रहेंगे यार, वो तो आई डोंट थिंक देयर इज दिस थिंग बट या सो दैट्स ग्रेट इनसाइट एंड लर्निंग। ठीक है, good, let's talk about, are you also seeing this AI wave impacting one what you are doing at Plunge to the consumers and inside your startup? Second, overall what do you see the trend as a founder? With respect to AI, AI, yeah. I think it's nothing to worry about. One thing, the way it is being portrayed and narrativized, there's nothing to worry about it. I'll tell you one thing. You know when Xerox came, Xerox, the company, not the photocopy, Xerox. जब Xerox ने पहली बार फोटोकॉपी मशीन बनाई थी, तो मेजॉरिटी लोग बोलते थे, who needs this? And then when mobile phones came,
when personal computer came, you'll not believe these were revolutionary products, right? But initially people said कि फोन तो चलते वक्त किसको बात करनी है. That's one part of it. Second part, you really have to see every job gets replaced with technology, but then you need people for that technology. So वो जो AI का नैरेटिव है कि नौकरियां जा रही हैं, वो मुझे लगता है खराब है. पहले पहले क्या होता था, एक हेलीकॉप्टर होता था, हेलीकॉप्टर का कैमरा वैन ऐसे कैमरा लेके जाता था और उससे एरियल शॉट लेता था. करेक्ट. ड्रोन आए तो उन दोनों की नौकरी गई, लेकिन ड्रोन चलाने वाली नौकरी बनी, ड्रोन बनाने वाली नौकरी बनी, जिन लोगों ने वो टेक्नोलॉजीज बनाई वो नौकरियां बनी. So it's just a shift of jobs. It's not, nobody's dying, that stuff is not happening. AI is a great thing. We all must use it. It is as revolutionary as internet. That's right. Yeah. And it's gonna go with, I think AI अभी MVP stage में है. I love how you talk in this startup terms. So yeah, uh, I share your sentiment कि AI is nothing to be afraid of, rather embrace too. There's an embrace to it. And हम लोग भी something similar ही कर रहे हैं with AI and finance. But yeah, I want to take your feedback on what do you think about Simplify Money and how, what steps have you followed in your financial journey जिसका तुम्हें कोई ऐसा यूरेका मोमेंट मिला हो कि यार ये मुझे पहले पता होता. हाँ बिल्कुल 100%. तो मैंने बढ़िया पैसे कमाए हैं. मैं सेल्स में था तो मैंने बढ़िया पैसे कमाए हैं. लेकिन मेरे साथ कैसा हुआ कि देयर देयर यूज्ड टू बी टाइम्स जब मेरे सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हैं. आज मैं सोचता हूँ कि मेरे सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख रुपए क्यों पड़े थे. व्हाई वाज आई नॉट इन्वेस्टिंग इट. क्योंकि मुझे लगता था कि इन्वेस्टमेंट अभी थोड़ी करते हैं, इन्वेस्टमेंट तो 35 के बाद करते हैं, अभी तो मजे मारते हैं. लेकिन मजे में 10 लाख, पूरे 10 लाख रुपए से मजे थोड़ी मारा था. 10 लाख रुपए तो पड़े थे अकाउंट में बस. I think I was dumb on that part when I was making money. I'm 27 right now. I've been making money since 21. So 6-7 years I've made money. I did not know what to do with it. One friend would tell me कि क्रिप्टो में डाल दो, तो मैंने डाल दी. One friend would say कि शेयर्स में डाल दो, लेकिन पूल नहीं लगा तो नहीं डाले. क्रिप्टो में डाल दिए, 4-5 लाख रुपए वो डूब गए, तो मालूम ही नहीं था. और क्या ये एक जेंजी ट्रेट है कि कूल होना बहुत जरूरी है? Uh, it needs to sound cool. It definitely needs to. because think about it. हमारे दादा लोग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते थे क्योंकि बॉन्ड शायद उनको कूल लगते थे, या सेफ्टी नेट. और उस टाइम पे सेफ्टी नेट बहुत जरूरी था. आज जेंजी इन्वेस्ट करना चाहता है एनएफटीज में, क्रिप्टो में. यू विल नॉट बिलीव, यू इफ यू गो टू यूएस देयर इज अ पर्टिकुलर टर्म व्हिच इज कॉल्ड क्रिप्टो किड्स. These are kids who are 21, 19, 20, 21, 22 and they're millionaires only because of crypto. Specifically called crypto kids. But on that same point, इसी फैड को फॉलो, I'm calling it a fad just because क्योंकि जो लगा रहा है रिसर्च करके इट इज एब्सोल्युटली ओके फॉर देम. Yes. लेकिन बाकी जो जितनी छपरी जनता इसको फॉलो कर रही है ब्लाइंडली, दे आर लूजिंग मनी बाय द डे और बाय द नाइट एंड इट इज कॉजिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस टू देम. And I've lost this money, and that is where I think Simplify Money is doing a great job telling where to invest, how to also diversify and take bets. I think diversification is very very important. See, if you ask me, मुझे तो डाइवर्सिफिकेशन तो दूर की बात है, मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि पैसा इन्वेस्ट भी करना चाहिए. मैं सोचता था सेविंग्स अकाउंट में पड़ा बढ़िया है जी, यही तो एम है. यही तो एम है, पैसे इकट्ठे करने हैं एक जगह. मेरे को तो ये भी नहीं मालूम था. बट देन इफ I've seen your product, it tells you where do you want to put, where you should put your money. I think that's amazing. See, and a normal person, a normal layman, Gen Z or in any person does not have इतनी अकल कि वो सोचे कि भाई अभी हर शेयर्स निकाले उसमें से देखे कि which one is doing good और मुझे ऐसे. But then a product like yours which tells how to diversify, where all to invest, कहाँ पे कहाँ पे CAGR अच्छा रहा है पिछले 5 साल में, किस म्यूचुअल फंड ने अच्छा दिया है, किस शेयर ने अच्छा दिया है, एटसेट्रा एटसेट्रा. और फॉर दैट मैटर इन्वेस्ट करना ही क्यों है, या इमरजेंसी फंड क्या होता है या इंश्योरेंस क्या होती है. और मे बी देयर इज अ बैरियर व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग मनी, राइट. एंड यू आर सॉल्विंग दैट बैरियर वेयर समबडी थिंक्स कि यार पैसा डालना है, लेकिन कैसे डालते होंगे, कैसे करते होंगे. जैसे अगर आज हम एंजल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो मेरे को ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम स्टेटमेंट लगती है. मुझे लगता है देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू इन्वेस्ट मनी इनटू स्टार्टअप्स, दे जस्ट डोंट नो हाउ टू डू. आई एक्चुअली कंप्लीटली एग्री. मैं And I've been giving this idea to a lot of people who I think who are from IB backgrounds, and I've been telling them कि भाई तुम ये बनाओ,
And actually, there are startups who are already. I'll not take names. Let's not give fame. But there are three or four startups that are actually doing it. लेकिन वो इकोसिस्टम को थोड़ा खराब कर रहे हैं. वो एक तरफ की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर रहे हैं, which means you can go to them, you can put 1 lakh 2 lakh and they'll let you invest. Yeah, they'll let you. चलो नाम ले लेते हैं. So so there is angel list. एंजल लिस्ट में मिनिमम आई थिंक 5 या 6 लाख रुपए है. वो आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं. But then there is B2C Insider, there is Let's Venture, there is Misfit, a lot more. और बहुत छोटे भी. लेकिन ये कहाँ लूटते हैं? ये 1 करोड़ का रेज कर रहा है स्टार्टअप इनसे, तो ये 20% आपसे टॉपिक कहीं और जा रहा है, तो ये 20% आपसे फीस ही मांग लेते हैं, लीगल फीस. Then they're doing, they're solving for angels, but they're putting a dent here too when it comes to the startups. तो मतलब हम उधर नहीं वही तो है. हाँ. जेनसॉल हमारी हुआ यार. हमारे ज्यादा हो जाएगा. It's not good to generalize, compartmentalize करने में. But the point is कि everybody needs direction and guidance, and that is something which we need. So because the first time when I looked at your product and I said, even if these guys are solving a problem statement that they're telling people to invest, I think that itself is a very big problem. And then on top of that, if you're giving an interface from where you can invest, cherry on the cake. बस माता रानी की कृपा है, वो कर रहे हैं, हो जाए बहुत बढ़िया. ठीक है, विल मूव पास्ट दैट. आई वांटेड टू टच मोर ऑन कि ये जो जर्नी करी है, इसमें से लर्निंग क्या-क्या है और नेक्स्ट स्टेप क्या-क्या है, अगर किसी को फाउंडर बनना है, व्हाट वुड यू एडवाइस कि क्या प्लान करो? क्या सिर्फ मिशन होना काफ़ी है या नहीं है? क्योंकि हम तो भाई मिशन था, कूद गए, उसके बाद सोचा है क्या करें. तो हाउ डू यू व्हाट वुड यू एडवाइस? लेट्स जस्ट से दैट. Yeah, thing number one is the first timer's dilemma. हुँ. You do anything for the first time, you spend a couple of years in that and you go back and you see, ओ ये तो मैं बहुत फास्ट कर सकता था, ये तो मैं बहुत अच्छे से कर सकता था, पर मुझे अकल नहीं थी ना, तो मैं नहीं करते से. व्हेन आई लुक बैक नाउ लास्ट 10 इयर्स ऑफ माय माय स्टार्टअप, तो मैं बहुत बार देखता हूँ कि यार बहुत जगह हमने समय खराब किया है, बहुत जगह गलत डिसीजन लिए हैं, वो डिसीजन सही हो सकते थे. बट जैसे कि टेल मी दैट. जैसे कि यस, जैसे कि अ, मेरा प्रोडक्ट अच्छा था, जो मैंने एमवीपी बनाया था, अ, और एमवीपी में कुछ इश्यूज आ रहे थे. सो सिंस आई डोंट कम फ्रॉम अ टेक बैकग्राउंड, द मिस्टेक आई मेड इज आई सेड हम पूरा प्रोडक्ट ही रिवैम्प कर देंगे, पूरा यूआई रिवैम्प कर देंगे. उसमें हमें 2 महीने लग गए. Whereas what I could have done is I could have made it a weekly cycle or a bi-weekly cycle, and bi-weekly I could have kept pushing updates. I could have solved these bugs in this week, push an update, change the first page next week, push an update. We rather waited for these 2 months, and we wasted these 2 months. फर्स्ट टाइम फाउंडर होते हैं First time found a mistake. कि भाई आपको वैलिडेटेड लर्निंग करनी है, यू हैव टू लॉन्च वेरी क्विकली एंड जस्ट कीप लॉन्चिंग एंड एवरीथिंग एल्स विल हैपन. एंड इट्स ओके टू डू शिटी थिंग्स. Yes. पॉडकास्ट शिटी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. No, no, no. लॉन्च करना है, No, लॉन्च the- करने से मतलब. The best part is this is the shitty is not shitty. हाँ, मतलब the shitty is actually correct. First is shitty, 10th will be less shitty, 100th will be beautiful, and that's the journey. Correct. So that was one big learning, and a lot more things where there you see, as a human you always look back and you can say ये और better हो सकता, ये और better हो सकता था, ये और better हो सकता था. But then the comparison has to come from nobody else. The comparison has to come from कि क्या मैं second time found रहा हूँ फिर भी गलतियां कर रहा हूँ. That's the correct quantification. When I'm saying that okay I made all these mistakes, but I also compare it with a parameter where I say that okay I'm a first time founder, so these mistakes are lazmi, ये गलतियां लाजमी है. Have I been a second third time guy and still made mistakes? I'm definitely not built for doing startups. मोटा मोटा पॉइंट ये हुआ कि इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, एब नॉट ओके टू रिपीट देम. It's not okay to repeat them, and it's very important to make mistake very fast एंड फेल फास्ट. and fail very fast, and Yeah. don't be scared of things. Have a huge risk appetite where today you think that मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को 10,000 की बेट लेनी है, ले लो. वो 10,000 वैसे भी किसी काम की नहीं है. एक कैलकुलेटेड बेट ले लो फटाफट. आपको लगता है एक मार्केटिंग मतलब अगर आप सीड स्टेज पे हो, आपको लगता है यार ये 10,000 रुपए खर्चूंगा तो क्या हो जाएगा, ये नहीं खर्चोगे तो वैसे भी कुछ नहीं होगा. क्या करोगे 10,000 रुपए बैठ के, 10 करोड़ तो है नहीं. टेलिंग दिस टू सीड स्टेज गाइस, स्पेंड दैट फकिंग 10,000 रुपीज, थोड़ा सा कैलकुलेट करके खर्च कर दो, कुछ रहे कर लो. हाँ, और अरे हाँ हाँ या मैं समझ गया. So I think that's a very valid point, and
On that note, we'll wrap up the asking questions part. But if you have any questions for me, I would love to answer. या कोई ऐसा closing statement या remark कि भाई plunge use करना है, simplify money use और कुछ भी ऐसा कहना है भाई डाउनलोड करो और जो अच्छा लगता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है उसको यूज करो और आपको लगता है कि आपको फीडबैक देनी चाहिए हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो फीडबैक दो और फिर इंतजार करो नई प्रोडक्ट के आने का अगर आप रेजोनेट करते हो विद व्हाट पराग इज सॉल्विंग और आई एम सॉल्विंग you can also hit us up be a part of our journey work with us that is another message and yeah do try both of our apps Yeah. All right, that was Nikhil and I and cameraman Manu के साथ. साथ We are signing off. Thanks a lot for listening to us.